वडोदरा महानगर पालिका चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शहर के वार्ड नंबर 7 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारी उत्साह देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने एक साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 7 के बीजेपी के उम्मीदवार आदित्य पटेल, श्वेता चौहान, मेघा राणा और सचिन खंडेलवाल आज सुबह से ही चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे। इन चारों प्रत्याशियों ने आज वार्ड की प्रमुख सोसाइटियों का दौरा किया और मतदाताओं से सीधा संवाद किया। आज के इस जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी की इस चौकड़ी ने मुक्तानंद, आम्रपाली, चंद्रावली और चंद्रलोक जैसी प्रमुख सोसाइटियों का दौरा किया, जहां घर घर जाकर उम्मीदवारों ने विकास के नाम पर वोट मांगे और जनता की समस्याओं को सुना। प्रचार के दौरान उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रत्याशी आदित्य पटेल और सचिन खंडेलवाल ने स्थानीय युवाओं से संवाद किया, वहीं श्वेता चौहान और मेघा राणा ने महिलाओं के बीच जाकर बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उम्मीदवारों का दावा है कि वार्ड नंबर 7 की जनता इस बार भी विकास और बीजेपी के सुशासन पर अपना भरोसा जताएगी। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर वોર્ડ નંબર 7ના ઉમેદવારો આજે ફેરની સ્વરૂપે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફરી રહ્યા છે। લોકોનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, અપાર પ્રેમ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। તેનું એકમાત્ર કારણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ નિશાન છે, મજબૂત આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું નેતૃત્વ છે અને અલગ અલગ રાજ્ય સરકાર હોય કે મહાનગરપાલિકા હોય તેના દ્વારા સીમાચિહ્ન રૂપ આંતરમાળખાકીય સુવિધા હોય કે સીમાચિહ્ન રૂપ પ્રોજેક્ટ હોય, આ પ્રોજેક્ટનું સાકાર થવું, આ તમામ વિષયો લઈને લોકો વચ્ચે જઈ રહ્યા છે। અને બીજી બાજુ જેની નીતિ નિયત નેતૃત્વ નથી એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી છે અથવા અન્ય રાજકીય પક્ષ છે। સાથે સાથે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસ, આ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોટી ફોજ છે। અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે 26મી તારીખે જંગી મતદાન થવાનું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચારે કમળના આશીર્વાદ મળવાના છે અને આ પેનલ जंगी बहुमती विजेता बनवानी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।